बैंक रेट बढ़ाने के रिजर्व बैंक के फैसले का असर बाजार पर दिख रहा है। सेंसेक्स आज 300 अंक नीचे खुला है, लेकिन रुपए में मजबूती दिख रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 70 पैसे मजबूत हुआ है। बड़ी खबर यह है कि बैंकों के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। तो आरबीआई के कदम का असर ये हुआ है कि 300 अंक नीचे ही खुला आज बाजार। रुपया तो मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले, लेकिन बैंकिंग शेयर्स में गिरावट की वजह से सेंसेक्स खुलते ही, बाजार खुलते ही गिरावट देखी गई है। 300 अंकों की गिरावट के साथ ही बाजार खुला है। मेरे सहयोगी किशोर अजवानी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। किशोर, ये गिरावट जो है वो आरबीआई के फैसले के बाद और उससे जोड़कर देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, मतलब मुश्किल ये है कि आरबीआई जो कदम उठा रही है वो रुपए को मजबूत करने के लिए, ताकि रुपए की नकदी की उपलब्धता कम हो, जिससे रुपया थोड़ा मजबूत हो, जिससे भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो थोड़ा कम हो, जिससे सरकारी घाटा जो है वो कंट्रोल में आ सके और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन उसका सीधा असर ये भी है कि जैसे ही आप रुपए की उपलब्धता कम करते हैं। मैं रोक रहा हूं आपको, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को सीधे वहीं लिए चलते हैं। And it is being rolled out very rapidly. LPG, which touches practically every home, is being brought under the DBT, and I think by the end of the year, all LPG consumers will get the subsidy through the DBT. A number of steps have been taken to boost exports, to improve production of coal, to improve production of gas. In infrastructure, the Cabinet Committee on Investment has cleared projects worth 1,61,000 crore rupees. Environmental clearance has been quickened. 106 projects have got environmental clearance in the last 3 or 4 months. Discoms, distribution companies for power, they were all sick. A major initiative with a large amount of funds has been launched by the Government of India, and all state governments have now come on board. The Government of India takes on 50% of the liability, and the distribution companies will be restored to health. New ports have been approved, new airports have been approved. A rail tariff authority will be set up very soon. 2 new loco projects have been sanctioned in the railway sector. 2 new semiconductor fabs that is coming up to the cabinet shortly. The spectrum issues have all been sorted out. Auctions have taken place. Another round of auctions for the balance spectrum will take place shortly. Fertilizer policy has been approved. New units will be granted approval shortly. The Kochi Metro Rail and the Mumbai Metro Phase 3 have been approved. The work on the dedicated freight corridor is moving at a fast speed. The National Skill Development Mission has been launched, and as I said in the budget, it's a very ambitious program. We intend to help young men and women acquire skills, and the government will reimburse the cost of training at an average of rupees 10,000 per young boy or girl who enrolls in one of the approved institutions and undergoes one of the approved courses. Last year, 2012-13, we added 20,622 megawatts of additional capacity in power, the largest annual addition at any point of time. 2,485 kilometers of national highways were completed last year. Again, the highest length, the longest length
completed in any year. A number of other steps have been taken on the social sector side. I'm sure my colleague, Shri Ghulam Nabi Azad, would like to add to what I say, but on the social sector side, the most burning issue in the last year or so has been the violence against women and children. The Criminal Law Amendment Act was passed by Parliament. It deals with sexual offences against women, provides stringent and enhanced punishment. The other bill was the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Act. This is to protect women who are working from sexual harassment. And the Protection of Children from Sexual Offences Act, which came into force on 14th November 2012. We have got bills for the real estate sector, for the street vendors, on land acquisition. We hope that these bills can be passed in the monsoon session. The National Food Security Ordinance was promulgated a few days ago. It's a promise made by the UPA before we assumed office. It's an important, in fact, the most important legislative measure of UPA 2. I know that there are people who mock at the ordinance. I'm sorry for them. Nothing is more important than food security. Food security deals with two problems. One is hunger. There is still hunger in small pockets of India. In most of India there is no hunger, but in pockets of India there is still hunger. So food security is intended to deal with hunger. But there is another problem, malnutrition. Even when there is no hunger, there is malnutrition. Estimates vary, but roughly about 40-45% of our children, and I'm sure Shri Azad ji will add to it, suffer from malnutrition. Therefore, the Food Security Ordinance, which I hope will become a bill, is intended to deal with both hunger and malnutrition. There are direct benefits, there are huge indirect benefits. वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो सरकार की कामयाबियां गिना रहे थे, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाए गए कदम बता रहे थे और साथ ही फूड सिक्योरिटी बिल की भी जो खूबियां हैं वो गिना रहे थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि सेंसेक्स खुलने के साथ ही 300 अंकों की गिरावट देखी गई है। आरबीआई ने जो कदम उठाया, बैंक रेट जो बढ़ाए हैं, उसकी वजह से गिरावट देखी जा रही है। अधिकतर बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आई है, 70 पैसे मजबूती आई है। और जो कमज़ोरी रुपए में आ रही थी, डॉलर के मुकाबले लगातार बेतहाशा गिरावट रुपए में देखी जा रही थी, उसी को मजबूती देने के लिए कल आरबीआई ने जो कदम उठाया है, बैंक रेट्स बढ़ाए हैं, उसकी वजह से डॉलर की तुलना में रुपया जो है वो मजबूत हुआ है। बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना अब मुश्किल हो जाएगा। बैंक रेट से ये होगा, लिक्विडिटी जो है, उपलब्धता पैसे की जो है, उस पर अब अंकुश लगेगा। बैंक कर्ज लेकर डॉलर नहीं खरीद पाएंगे। इससे रुपए पर दबाव घटने की उम्मीद है और इसी मंशा से ये बैंक रेट बढ़ाया गया है और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश हुई है। 70 पैसे मजबूती रुपए में देखी जा रही है।